हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो इस चैप्टर में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, स्टार्टर पॉइंट इज गिवन। कंप्लीट द फॉलोइंग टू सेंटेंसेज एक्सचेंजिंग द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस को आपको बाय एक्सचेंजिंग द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट आप फर्स्ट इमेज देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिखोगे आई एम ईटिंग अ मैंगो। ओके, अब इसमें क्या कर दोगे, जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस में, वो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, सो द सेकेंड सेंटेंस विल बी अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। ओके, now let's start the chapter. So the first topic is active and passive voice. There are two types of voice, active voice and passive voice. Read the following sentences. Megha eats an apple. An apple is eaten by Megha. The above two sentences mean the same. दोनों sentences का meaning जो है वो same है, but they are different in form. पर इनका जो form है वो थोड़ा different है. Some sentences focus on the subject or the doer of the action. कुछ sentences होते हैं जो subject पे focus करते हैं, जो जिसने वो action को किया है उस पे focus करते हैं. In sentence 1, Megha is the subject and eats is the verb. ठीक है, सेंटेंस पहले जो हमने देखा सेंटेंस 1 में, मेघा जो है वो सब्जेक्ट है और ईट जो है वो वर्ब है. इन दिस सेंटेंस मेघा डज द एक्शन ऑफ ईटिंग. मेघा जो है वो कर रही है उस एक्शन ऑफ ईटिंग को. सो दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. तो ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में है. नाउ नेक्स्ट थिंग, सम सेंटेंसेस फोकस मोर ऑन द एक्शन एंड इट्स रिसीवर. कुछ सेंटेंसेस है जो कि फोकस कर रहे हैं ज्यादा एक्शन में और उसके रिसीवर में. ओके, इन सेंटेंस 2 एंड एप्पल इज द सब्जेक्ट. सेंटेंस 2 में एप्पल जो है वो सब्जेक्ट है एंड ईटन इज द वर्ब. ईटन जो है वो वर्ब है. In this sentence, an apple does not perform the action of eating. Instead, it receives the action of eating. Apple कोई action of eating को perform नहीं कर रहा है, instead वो ले रहा है action of eating को. ठीक है, so this sentence is said to be in passive voice. तो इस sentence को हम passive voice में बोलते हैं. ठीक है, when the subject of a verb is the doer of an action, the verb is said to be in the active voice. जब subject जो होता है verb का वो doer होता है, मतलब वो ही उस action को कर रहा है, तो इस type of sentence को हम बोलते हैं active voice. ठीक है, for example, I play badminton. Now next thing, when the subject of a verb is the receiver of an action, the verb is said to be in the passive voice. जब subject जो है वो receiver होता है action का, तो उस verb को हम passive voice बोलते हैं. ठीक है, for example, badminton is played by me. Sentences in active voice gives more importance to the subject. Sentences जो active voice में होते हैं वो ज़्यादा important subject को देते हैं. Sentences in passive voice gives more importance to the action and the receiver. अब sentence जो passive form में होते हैं वो ज़्यादा importance देते हैं action को और receiver को. ठीक है, now student, इसी के basis में आपको exercise दी गई है जो कि आपको complete करना है. Now the next topic is changing sentences from active to passive voice. We can change sentences from active into passive by following the given process. तो आप देख सकते हो, first thing, first divide the sentence into 3 parts, subject, verb and object. पहले तो आपको divide करना है sentence को 3 part में, जो कि है subject, verb और object. Okay, for example, Kajol eats a mango. तो Kajol subject है, eats आपका verb है, a mango is a object. Okay, next thing, rewrite the sentence using the object as the subject and the subject as the object. आपको फिर से सेंटेंस को लिखना है, इसमें आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब. आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है सुटेबल हेल्पिंग वर्ब के साथ. नेक्स्ट थिंग, एड द प्रपोजिशन बाय बिफोर द डूअर ऑफ द एक्शन. डूअर ऑफ द एक्शन से पहले आपको प्रपोजिशन बाय यूज करना है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ मैंगो इज ईटन बाय काजोल. ओके, तो अ मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट फॉर्म. ओके, हेल्पिंग वर्ब इज है आपका यहाँ पर, बाय आपका प्रपोजिशन है. ठीक है, और सब्जेक्ट जो है जो कि अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो उससे पहले हमने प्रपोजिशन का यूज किया है. ठीक है, now let us learn how we change sentences from active to passive in different tense. तो different tense में हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, चलिए अब देखते हैं. तो फर्स्ट वन है सिंपल प्रेजेंट.
रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आपको टेबल में एग्जाम्पल दिए हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। सो आप देख सकते हो फर्स्ट है राज राइट्स एन एसे, तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में जो कि है एन एसे इज रिटन बाय राज। नेक्स्ट वन वी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। द हंटर किल्स द बर्ड्स आर किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट वन डू यू लर्न फ्रेंच, इज फ्रेंच लर्न बाय यू। नेक्स्ट वन हु नॉक्स ऑन द डोर, by whom is the door knocked on, or who is the door knocker, who is the door knocked by. Okay, now here you can see active voice root form of the verb sometimes uses s/es, example है writes play. Next one passive voice is mr plus past participle form of the verb is written is played. Okay, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हियर यू कैन सी इन दिस टेबल चेंज ऑफ पर्सन। तो अब पर्सन कैसे चेंज हो जाता है जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, जैसे कि आई मी, ही हिम, वी अस, शी हर, यू दे देम। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट वन दैट इज सिंपल पास्ट। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको दिया है। आई बॉट अ पेन, a pen was bought by me. He wrote a letter was written by him. Next one, she ate the cake, the cakes were eaten by her. The cakes were eaten by her. Next one, did you buy the dress, was the dress bought by you. Next one, where did you find your book, where was your book founded by you. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो रूल आपको दिया है एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, एग्जाम्पल है bought ate, पैसिव वॉइस was/were प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, एग्जाम्पल है was bought were eaten. ओके, अब इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस। सीमा विल सिंग a song will be sung by Seema. Megha will write a letter will be written by Megha. We will learn the lesson will be learned by us. Will she help you, will you be helped by her. Who will accept our invitation, by whom will our invitation be accepted. Okay, so आप यहाँ पर देख सकते हो आपको रूल दिया है एक्टिव वॉइस shall/will प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एग्जाम्पल है will sing, will write. Okay, passive voice shall be/will be plus past participle form of the verb, example है will be sung, will be written. Okay students, now student इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। Now the next is present continuous. Read the following examples, active voice, passive voice. Ashok is writing a letter is being written by Ashok. Next thing, Simi is doing her homework is being done by Simi. Next, is he opening the door now, is the door being opened by him now. Next, who is washing the car, who is the car being washed by. Now here you can see rules are given. Active voice is/am/are plus ing form of the verb, for example is writing, is doing. Now passive voice is/am/are plus being plus past participle form of the verb, for example is being written, is being done. Okay, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, पैसिव वॉइस इज his homework was being done by him. Next one, who was playing the piano, passive voices, who was the piano being played by. Now here you can see the rule, active voice was/were plus ing form of the verb, example was doing. Passive voice was/were plus being plus past participle form of the verb, example was being done. Okay, now इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है स्टूडेंट जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। Now the next is future continuous. Verbs in the future continuous cannot be expressed in the passive voice. अब जो verb future continuous में होते हैं उसको हम express नहीं कर सकते हैं passive voice में. Okay. So next one is present perfect. Read the following examples. Active voice and passive voice. I have finished my work. My work has been finished by me.
Next one, she has drawn many pictures. Many pictures have been drawn by her. Next one, have they invited you? Passive voice, have you been invited by them? So here you can see the rule. Active voice has / have plus past participle form of the verb. For example, have finished. Passive voice has / have plus been plus past participle form of the verb. For example, has been drawn. नाउ स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट. Read the following examples. Active voice, passive voice. He had received a telegram. A telegram had been received by him. Had he broken my window? Had the window been broken by him? The rule is active voice has plus past participle form of the verb. For example, had received. Passive voice had plus been plus past participle form of the verb. For example, had been received. नाउ स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट. रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स. I shall have learned the lesson. Passive is the lesson will have been learned by me. Next one, will she have read the book? Will the book have been read by her? Rule is active voice shall / will plus have plus past participle of the form of the verb. For example, shall have learned. Passive voice shall / will plus have been plus past participle form of the verb. For example, will have been learned. Now स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.